Hello and welcome students. So I Kumar welcome you again to this amazing platform where ease your preparation. So in the series of important 50 questions, today we are on the 7th day and on the 7th day we will be taking the 7th question. Alright, so let's start with the question. So the question is from the chapters of time, speed and distance. Okay, slight mistake is there. Alright, so what this question is. So train A and B start at the same time towards each other with constant speed from x and y respectively. Okay, so we have been given with two trains. Okay, so there is a station X and there is station Y. So there is station X and there is station Y. Okay, train A is starting from this and is moving to this direction, and train B is starting from this station and is moving in this direction. Okay, train A reaches Y in 10 minutes. So it is given that the total time taken by train A to cover this distance is what? So from here to here, okay, the time taken by train A will be what? This is the time of A. It is 10 minutes. In 10 minutes of time, train A will be meeting the or will be reaching station Y. While train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. मीन्स समवेयर मान लो x और y के बीच में सपोज कहीं पर ये मान लो x पॉइंट है वेयर ट्रेन A एंड ट्रेन B मेट. ठीक है, बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम एंड बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. सो देयर विल बी अ टाइम आफ्टर विच दे वुड हैव मेट. सो इट सेज दैट आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, सपोज द मीटिंग हेल्ड एट दिस पोजिशन. आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, नाउ द ट्रेन B is taking extra 9 minutes to cover this distance. ठीक है, ट्रेन B takes extra 9 minutes to reach to station X after they have met for the first time. The total time in minutes by train B to travel from Y to X. So what we have to find? We have to find the total time, okay, that train B will be taking in order to reach from. We have to find time taken by B to reach from Y to X. ठीक है, Y से लेकर टोटल X जाने में कितना टाइम लगेगा वो हमें आंसर फाइंड आउट करना है. Now when I saw this question, ठीक है, initially I thought let's do it by equations, बट मुझे लगा कि यार चलो ऑप्शंस तो है ही, और जब मैंने ऑप्शंस देखा ना तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए मेरे से. तो सो दैट्स व्हाई आई थॉट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन विल बी व्हाट? ऑप्शंस एलिमिनेशन. ठीक है, सो अब दो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होंगे? देखो, इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट समवेयर द मीटिंग हेल्ड हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर इफ इट इज टेकिंग 9 मिनट्स, सो ऑब्वियसली टोटल टाइम 6 मिनट्स तो हो नहीं सकता. ठीक है, ऑब्वियसली 6 मिनट्स तो हो नहीं सकता. एंड एट द सेम टाइम 10 मिनट्स कैन ऑल्सो नॉट बी देयर. व्हाई? बिकॉज देखो, अगर ये ट्रेन को भी 10 मिनट्स लग रहा है एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो टेकिंग 10 मिनट्स, सो आफ्टर दे विल बी मीटिंग एट द सेम टाइम. अगर दोनों का टाइम टेकन सेम है, ठीक है, इसे भी 10 मिनट्स लग रहा है और इसे भी 10 मिनट्स लग रहा है, इसका मतलब दोनों की स्पीड सेम है. अगर दोनों की स्पीड सेम है तो अगर यहां से यहां आने में से 9 मिनट्स लगा है तो यहां से यहां आने में इसे भी 9 मिनट्स लगेगा. ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो सेम टाइम लगेगा ना. तो अगर इसे 10 मिनट्स लगा है तो इसे भी 10 मिनट्स लगा, और अगर यहां से यहां आने में से 9 मिनट्स लगा है तो इसे भी यहां से यहां आने में 9 मिनट्स लगा होगा. यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता, 10 मिनट्स भी आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो दोनों की स्पीड सेम है सो दे विल बी मीटिंग एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट. ठीक है, और अगर मिड पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये 9 मिनट्स है तो ये भी 9 मिनट्स होना चाहिए था, जो कि फीजिबल नहीं है. ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है. तो या तो आंसर ए है या तो आंसर बी है. सो यू कैन ट्राई विथ एनी ऑफ द आंसर. ठीक है, आपको लगता है कि आप 15 से ट्राई करो, आप बी से ट्राई करो. ठीक है, स्टार्ट विथ एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन, आइदर ए और बी. ठीक है, सपोज यू आर स्टार्टिंग विथ बी. इफ बी डजंट वर्क और बी, इफ बी वर्क्स, ओके, बी इज द आंसर, नो वरीज. इफ I am starting with A and A works, so A is the answer. But if suppose it is not working, then definitely B is answer. मेरे को दोनों केस में सिर्फ एक बार ही सॉल्व करना पड़ेगा. So suppose I am assuming, okay, let 15 is the total time. Suppose, ठीक है, आप just assume this is the answer. तो अगर 15 total answer है तो ये क्या होगा? From here to here it has taken 9 minutes. So from here to here it must have been 6 minutes. तभी तो total time 15 होगा. ठीक है, अच्छा, अब इसे अगर 6 मिनट्स लगा है तो दिस ट्रेन ऑल्सो माइट हैव टेकन 6 मिनट्स. क्यों ऐसा? देखो, द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड एट दिस पोजीशन. ठीक है, तो अगर टोटल टाइम 15 रखा है तो ये यहां से यहां 6 मिनट्स में आया. एट द सेम टाइम ट्रेन ए विल बी कमिंग फ्रॉम स्टेशन एक्स टू दिस पॉइंट इन 6 मिनट्स, तभी तो मीटिंग होगा.
ये भी 6 मिनट्स में यहां से आ गया और ये भी 6 मिनट्स में यहां से आ गया. सो दैट्स वाई मीटिंग हेल्ड एट दिस प्लेस. एंड अगर ये 6 मिनट्स है, सो दिस विल बी 4 मिनट्स because the total time taken by train A is what? It is 10 minutes. तो अगर ये 6 है तो ये 4 होगा. Now the question is now like this. So we have कि suppose there are two trains, one is starting at this at station X and other one is starting from station Y. Okay, after meeting each other, this train takes extra 4 minutes to reach and this train is taking extra 9 minutes to reach. So from this, can we get the speeds of train A or can we get the ratios of speeds of train A and train B? So we can have train A upon train B as what? It will be under root of 4 upon 9. I hope everyone might be knowing this relation. Or we can say that it will be what? It will be 3 upon 2. So in general, train A की जो speed है, it is 3x और train B की जो speed है, that is 2x in general. Now we have the speeds of the train, okay, in terms of x. Now simply just see कि क्या मेरे condition satisfy हो रहे हैं या नहीं. देखो, the speed of train A is 3x. So the distance traveled by train A in 6 minutes will be what? ठीक है. तो total time कितना लगा है? ट्रेन A को total time लगा है 10 minutes. तो 10 minutes है और इसकी speed कितनी है? 3x. तो ये total distance क्या होगा? Total distance और distance of x to y will be what? The time taken by train A is 10 minutes and the speed with which it is traveling is 3x. So we can say that the total distance is what? It is 30x. Now if I'll be putting the value of train B, I'll be getting ये मिल रहा है या नहीं वो चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर ये 9 minutes के लिए चला है with a speed of 2x, so the distance traveled, suppose this is x, suppose I'm naming it as q. So what will be the distance of xq? The distance of xq, as the train has ran for 9 minutes with a speed of a, so 9 into 2, it will be 18x, and the distance from q to y will be what? Okay, distance from q to y will be what? Again the speed time is 6 and the speed is 2x, so it will be 18x. So sorry, it will be 12x. So this is 12x and this is 18x. So if you'll add 12 and 18, this is 30x. So this is also 30x and this is also 30x. Means if I am assuming this as my answer, okay, my all the conditions are met. इसका मतलब क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही आंसर है. Had my conditions have not been met, ठीक है, तब मैं बोलता ओके ऑप्शन बी इज आंसर. इन एनी सिनेरियो आपको सिर्फ एक ही बार सॉल्व करना है. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. सो डे 7 द आंसर इज व्हाट? इट इज ऑप्शन 15. Oh sorry, question option A. All right, so that's all we have in this session. But before we wrap, if you want to crack your CAT 2024 GD and PI to get into IIMs and top B schools in just one attempt with personalized approach, okay, to join the session, the link is there in the description. Okay, you can join the series where a personalized approach will be given to us. So that's all we have in today's session. So thank you.